Hello everybody. Well, our next query is from a bank executive and he writes that I am working in bank and also preparing for my UPSC exams as I have very less time to prepare and more to learn and absorb in that very short time. So could you please guide me for concentration improvement? All right, yes. When you have less time and lot to study and absorb, obviously your concentration should be higher. And the higher is your concentration, better and faster will be your results. Okay, so let's understand the steps to improve your concentration. Step number one, be in the happiness and confidence frequency because a dull, irritable, and angry mind cannot have good concentration. कभी भी एक गुस्सा हुआ या फिर इरिटेट हुआ मन बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता. जिसे अपना कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाना है उसे सबसे पहले माइंड पीस पर फोकस करना होगा. प्लीज इंश्योर दैट योर माइंड इज एट पीस सो दैट इट इज रेडी टू कॉन्सेंट्रेट. नाउ स्टेप नंबर 2, यू नीड टू प्रायोरिटाइज ऑन टॉपिक्स टू बी कवर्ड. बिकॉज ऐसे एग्जाम्स के लिए कितनी भी टॉपिक्स कवर करो कम ही होता है. देयर आर टू मेनी टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड फॉर गुड रिजल्ट्स. So to prioritize, you may take suggestions or guidance from people who have achieved in the same field. Point number 3, once your prioritizing is done, take one topic each day and study for about 20 to 30 minutes at a stretch with full concentration, and that is possible. Because when you tell your mind, जब भी आप अपने मन को बताते हो कि मुझे बस सिर्फ 20 से 30 मिनट ही पढ़ना है, then the mind doesn't take load. Mind उसका टेंशन नहीं लेता और आराम से concentration हो जाता है. उस टाइम ज़रा भी कोई भी deviation या distraction आपको tolerate नहीं करनी है. That time, in those 20 to 30 minutes, you're not supposed to think, listen or look into anything else other than this study. And that will help you a lot. Now step number 4, when you're studying, take a pen and a paper and write down the keywords of whatever you have studied, because these keywords will help you remember the main points of the topics for a very long time. Step number 5, सुबह थोड़ा सा पढ़ लिया 20-30 मिनट्स, आपने उस पर पूरा ध्यान किया, उसके कीवर्ड्स भी निकाले. तो पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवी स्टेप क्या है? You have to remember all these keywords throughout the day when you're going through your routine. आपको उस पूरे दिन में वो सारे keywords remember करने हैं. उनका जाने अनजाने में रिविजन मन में चलता रहना चाहिए. That will help you a lot. And now 6th and last step. You have studied for 20-30 minutes. You have taken out the keywords, remembered those keywords throughout the day. आपने वो कीवर्ड्स निकाले हैं, पूरे दिन भर उन कीवर्ड्स की रिवीजन की है. रात को क्या करना है? टेक योर रिवीजन डायरी. आपकी डायरी लेनी है एंड पुट द रिमाइंडर्स ऑफ रिवीजन एज पर द परफेक्ट रिवीजन प्लान. आपको आपकी रिवीजन डायरी में परफेक्ट रिवीजन प्लान के अनुसार सही डेट्स पे उसके रिवीजन रिमाइंडर्स डालने हैं. Well, if you want to know Growwise Academy's perfect revision plan, the link of that video is mentioned in the description below. So do use this technique and we're very sure that this will help you a lot. Thank you so much for your precious time. Thank you so much for subscribing and trusting us. If you have any more queries, keep writing to us. We will always try our level best to answer them. Stay tuned with Growwise Academy. Take care. Bye-bye.